निर्णय 2024। Good evening, listeners. Welcome to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I'm Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचार तो आप तक लाएंगे ही, साथ ही उन खबरों पर चर्चा भी करेंगे और इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानेंगे उनके राज्यों में क्या हैं चुनाव की तैयारियां और कैसा है चुनावी माहौल। आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन। मुकेश रंजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। And now, before we give you the election updates, let's have a look at the headlines for today. Prime Minister Narendra Modi addresses a public meeting in Piparia, Madhya Pradesh. Congress leader Priyanka Gandhi holds a rally in Rajasthan, Jalore. And electioneering in states and UTs going for polls in first phase reaches a peak. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पिपरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में रैली की और पहले चरण के मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा। The updates in detail. The BJP today released its manifesto called Sankalp Patra for the upcoming Lok Sabha elections at party headquarters in New Delhi. It promises uniform civil code, one nation, one election, and a single electoral roll. It was released in the presence of senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi, along with party president JP Nadda and senior party leaders Rajnath Singh, Amit Shah, and Nirmala Sitharaman. In the Sankalp Patra, the BJP has promised to continue providing free ration for the next 5 years under PM Garib Kalyan Ann Yojana and expanding the Ayushman Bharat Yojana to cover senior citizens. The Sankalp Patra focuses on making 3 crore Lakhpati Didis by empowering rural women and promises to make electricity bill zero with PM Surya Ghar Yojana. The party has promised to make the nation the 3rd largest economy in the world and a global manufacturing hub. In its election manifesto, the BJP said Gaganyaan will be launched, which will be Bharat's first human space flight mission to land an astronaut on the moon. The party has further promised to establish Bharatiya Antariksh Station and operationalize a second launch complex for the country. The manifesto also promises to launch a national atmospheric mission called MOSAM to make Bharat weather ready and climate smart. On maintaining peace in the northeast, BJP in its Sankalp Patra said the party will continue efforts to address the issues in the disturbed areas and remove AFSPA in a phased manner. The party has promised to further work towards resolving interstate border disputes amongst the northeastern states through sustained efforts. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसानों और गरीबों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का मजबूत विस्तार भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार अगले 5 साल में सभी योजनाएं जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने विश्व में बढ़ती अस्थिरता और तनाव के बीच देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों में संकट के समय भारतीयों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में बहुमत से चुनी गई मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। श्री मोदी का बयान ऐसे समय आया है जब कल ईरान ने इजराइल पर हमला किया। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और महंगाई कम करने जैसे मुद्दों पर भी भाजपा का घोषणा पत्र मौन है।
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra today said Prime Minister Narendra Modi is completely cut off from people and their issues. She claimed that he enjoys so much power that those around him are scared to tell him the truth. Addressing a public meeting in Rajasthan's Jalore, she said, people's biggest problem is inflation, but there is no one to listen. She claimed that BJP is not fighting against corruption, but only wants to gag the opposition. लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। Mukesh ji, electioneering in states and UTs going for polls in first phase have reached a peak. 102 parliamentary constituencies in 21 states are going to go to poll this very Friday, the coming Friday. And it's a mammoth election where nearly 968 million people are eligible to vote, which is more than the populations of US, European Union and Russia combined. So do you see it as a logistic marvel, a miracle? How do you see this playing out? In India, elections in democracy in India is considered to be a kind of an eighth wonder. From the very beginning in 1951, when the first election took place, from there onwards, India improved its electoral process. And electoral process has improved to an extent that the situation has emerged where there are very little or negligible repolling, or say in 70s or 80s we used to have, or even in 90s we used to hear about the violence and bomb blast and other things, but things have become very peaceful and people are participating in a big way. Voting percentage have increased, as you said, that around population even more than the European Union or the US. In the first phase itself, that number of people are going to vote. So these votes are, these people are voting and participating in a big way, in a sense that more than 60%, or in some states we have, like in Northeast, we have voting percentage going up to say 80, 85%, 87%. So that way, India is a very live democracy where people are basically rooted to this electioneering and everything. जी, मुकेश रंजन जी, आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया और वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं मतदाताओं से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात की है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है, और इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को भी अगले 5 साल तक और बढ़ाने की बात कही। किस तरीके से देख रहे हैं आप भाजपा ने जो आज अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं? क्या पार्टी की आगे की क्या राह और क्या सोच आपको लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 10 साल से शासन में है और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को एक एक करके पिक किया, अब जैसे आप 370 की बात करें, हाँ, और या कॉमन सिविल कोड की बात करें, राम मंदिर की बात करें, ये सब इनके एजेंडा पे आज से नहीं है, 1950 से जनसंघ के ज़माने से है जी। जो कि 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उन्होंने पूरा का पूरा वही सारा एजेंडा अपने इस पे लिया। तो अब ये बात होती है कि लोगों ने जब लोगों ने समर्थन दिया इनके आइडियोलॉजिकल प्लैंक को, तो जैसे ही मेजॉरिटी आई तो इन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। तो इन्होंने पहले 370, जैसे फर्स्ट टर्म में नहीं हुआ, सेकंड टर्म के शुरुआत में ही इन्होंने 370 को निरस्त किया। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रिपल तलाक इनके एजेंडे में था। तो कहने का मतलब है, जो ये प्रॉमिस करते हैं, जो इनके एजेंडे पे होता है, वो जरूर पूरा करते हैं, प्रोवाइडेड, यदि बशर्ते कि इन्हें जन समर्थन यदि उन सब विषयों पे मिलता है, तो वो जन समर्थन के साथ ये आगे बढ़ते हैं और उन जन समर्थन पे ये खरे उतरते हैं। अब रही बात की जो अभी इन्होंने संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए हैं, तो उसमें से 70% तो एक्सटेंशन है, जो ये पहले ही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
तो जैसे अन्न योजना की बात की आपने, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की, तो वो अन्न योजना चल रही है और उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया है। उसी तरह से जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो ये इनके एजेंडा में बहुत पहले से है। उस पर बहुत सारी कमिटियां बनी, पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी यदि इनके वादों पे यदि जनता का मुहर लगता है तो पक्का होगा। We have a very interesting special story on elections, but before that we'll take a short break. Lok Nirnaya 2024, a special program on the general elections, every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke Sath, Lok Nirnaya 2024. Welcome back to Lok Nirnaya 2024. And now the special story, like every time. This time too, there are many independent candidates in the election arena. There are several interesting stories of independent candidates who have been participating in elections for decades. Let us look at these stories. A report. Over the years, independent candidates have employed various tactics in their bid for electoral success. Yet victory has remained elusive. K. Padmarajan, hailing from Tamil Nadu, proudly dubs himself the election king or Chunavi Raja. Padmarajan stands out as the sole candidate who actively encourages people to not cast their votes in his favor. At 65 years of age, Padmarajan maintains this stance to retain his title as the most unsuccessful candidate, a distinction recorded in the Limca Book of Records and the Guinness Book of World Records for contesting the highest number of elections. In Indore, Madhya Pradesh, Parmanand Tolani continues his father's legacy, contesting as an independent candidate for 3 decades. Vijay Prakash Kodekar, a retired state electricity board employee from Pune, has entered the electoral fray under 24 different names. From Hyderabad, technical expert Ravindra Uppula tailors his campaign strategies for each Lok Sabha election, whether through an anti-corruption march in 2014 or a fasting demonstration in 2019. The late Kaka Joginder Singh, known as Earth Grabber, Dharti Pakad, made over 300 unsuccessful bids for electoral office. जी, और अब हम चलेंगे राजस्थान सीकर और सुनते हैं वहाँ से हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने सीकर लोकसभा सीट का लेखा-जोखा भेजा है। सीकर संसदीय सीट कुल 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। इनमें लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना तथा दूदू विधानसभा शामिल हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 22,32,000 से ज्यादा मतदाता हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले यहां करीब 1,90,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार यहां 64.76% मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ किसान, जवान और नहरी पानी मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। इस सीट पर भाजपा, माकपा, बसपा तथा अन्य पार्टियों समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर माकपा से गठबंधन किया है और अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। भाजपा ने 2 बार चुनाव जीत चुके सुमेधानंद सरस्वती पर तीसरी बार भरोसा जताया है। माकपा की ओर से अमरराम चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अमरचंद चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती मोदी फैक्टर और विकास कार्यों के दम पर जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, जबकि गठबंधन प्रत्याशी अमराराम अपने राजनीतिक जीवन के संघर्ष और कांग्रेस के वोट मिलने की उम्मीद में जीत के लिए दमखम लगा रहे हैं। जी, भाजपा सीकर लोकसभा सीट से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। स्वामी सुमेधानंद 2014-2019 में जीत चुके हैं। और लेकिन एक बहुत हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजस्थान में, गोविंद सिंह डोटासरा, खुद सीकर ज़िले से हैं और फिर भी पार्टी को गठबंधन करना पड़ा है और सीपीएम के साथ गई है और अमराराम को ये सीट पार्टी ने दे दी है। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? कांग्रेस की क्या मजबूरी वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को हम जब इलेक्टोरली देखते हैं तो कांग्रेस में जो राजस्थान में जो फैक्शनलिज्म है और उस फैक्शनलिज्म का नतीजा तो हमने असेंबली इलेक्शंस में देख ही लिया है। तो उस फैक्शनलिज्म के कारण भी दिक्कत है। दूसरा ये है
कि कांग्रेस आज की डेट में कहीं भी अकेले चुनाव लड़कर भाजपा को हरा नहीं सकती है। तो ये बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि वोट का बिखराव को रोक लें किसी भी तरह, और एन प्रकेन किसी भी तरह के अलायंस करके ये वोट का बिखराव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो वोट डिफरेंस है बिटवीन कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस के साथ आई हैं, उनका टोटल वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो वो भाजपा के टोटल वोट परसेंटेज से फिर भी कम पड़ता है। तो आप अरिथमेटिकली यदि गणित के हिसाब से देखेंगे तो भी यदि ये अलायंस में भी आते हैं तो भी दिक्कत होती है इनको, कि इनको वो नंबर नहीं मिल पाता है जहां ये भाजपा को हरा सकें। राजनीति तो ऐसे भी रसायन शास्त्र है, ये गणित तो है नहीं कि अब 2 जोड़ 2 4 होता है, ऐसा नहीं है, 2 जोड़ 2 22 भी बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है जब कांग्रेस अलायंस कर रही है कहीं, क्योंकि आज की डेट में 39 अलायंस पार्टनर तो बीजेपी के पास भी है डिफरेंट स्टेट्स में, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कांग्रेस जब जोड़ती है, जब अपना अलायंस बनाती है, तो इनके तो आजकल देख रहा हूं मैं कि 2 जोड़ 2 4 हो रहे हैं। जब भी भाजपा करती है अलायंस तो उसमें ये 2 जोड़ 2 कई बार 22 हो रहा है। और एक बहुत खास बात यहाँ पर यह भी देखने में आ रही है कि सीपीएम कांग्रेस का जो गठबंधन का जो कैंडिडेट हैं अमरा राम 7वीं बार चुनाव मैदान में है और पिछले 6 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं वहां से। Now we'll go across to Saswati Bhattacharjee, our regional correspondent from Assam, who is giving us the constituency profiling of Karimganj Lok Sabha constituency. Out of the 14 Lok Sabha seats of Assam, there are only 2 constituencies, Silchar and Karimganj, which are situated in Barak Valley, the predominantly Bengali-speaking area of Assam. Voters of these 2 constituencies will vote in the second phase of the election on 26th of April. Among these 2 constituencies, Karimganj is located in the southernmost tip of Assam. Famous for Asia's second largest freshwater lake, Shonbil, and historical place Malegar, which had witnessed Sepoy mutiny, majority of the total number of voters in Karimganj belong to the minority community. Usually an INC stronghold, the BJP managed to capture the Karimganj Lok Sabha seat in 1991 and then again in 2019 for the second time. Kripanath Malla, the BJP candidate from the constituency, secured 44.62%, while AIUDF's Radheshyam Biswas secured 41% and INC got 11.36% of the polled votes. This year, a total of 24 candidates are contesting as candidates for Karimganj Lok Sabha seat. This includes the current BJP MP Kripanath Malla, INC candidate Advocate Hafez Rashid Chaudhuri, AIUDF candidate Shahabul Alam Chaudhuri, 3 candidates from non-recognized registered political parties and 18 independent candidates. Previously, Karimganj was reserved for SC candidates, but now it has become a general seat after delimitation. Sitting MP and BJP candidate Kripanath Malla is trying to get the support of the minority voters, promising an equal share in development initiatives. The INC candidate Advocate Hafez Rashid Chaudhuri is campaigning more on so-called religious polarization around Citizenship Amendment Act, and the AIUDF candidate Shahabul Alam Chaudhuri has created a controversy related to the security of Rohingya migrants, drawing sharp criticism from both his INC and BJP opponents. Briefly, what would you say? You feel that the sitting candidate will be successful in these elections, which are due in the second phase from Karimganj? This, as he was mentioning about this Barak Valley, which is the southern tip of Assam and is bordering Bangladesh. So this CAA is going to be a big factor there, and interestingly, apart from the BJP candidate, there are 2 Muslim candidates there, and they are vying for the same votes. Yeah. So the division of vote, as it happened earlier in 2 occasions, may play out once again. Yeah. जी, और अब बात करेंगे जबलपुर सीट की, मध्य प्रदेश में है, और हमारे संवाददाता का ये एक रिपोर्ट इस जबलपुर सीट के बारे में, आइए सुनते हैं। 52 तालाबों और अनेक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों से युक्त मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर की लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है और प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है।
जबलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस सीट पर 18,83,000 से ज्यादा मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से करीब 9,57,000 पुरुष और 9,26,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 97 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। जबलपुर में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने आशीष दुबे को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी और कई स्थानीय पार्टियों के साथ ही 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के राकेश सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार विवेक कृष्ण तनखा को करीब 4.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। गोंडवाना और कलचुरी काल के इतिहास को समेटे और रक्षा मंत्रालय की निर्माण इकाइयों के लिए मशहूर जबलपुर सीट पर पिछले 27 सालों से भाजपा का कब्जा है। जी, भाजपा का गढ़ जबलपुर सीट, और इस बार बसपा का उम्मीदवार वहां पर चुनाव मैदान में है। हाँ, देखिए, बसपा का उम्मीदवार मैदान में है और कांग्रेस का भी उम्मीदवार है। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट बदले हैं वहाँ पे। जी, ठीक है। तो ऐसा है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जिस सीट पे ना भाजपा 2 या 3 बार जीतती रहती है, यदि कोई चीज़ आमूल कोई चीज़ का परिवर्तन ना हो जाए तब तक वो सीट बनी रहती है भाजपा के साथ। दूसरा, जो अभी प्रोफाइल में बताया कि द नंबर ऑफ वोट्स दैट राकेश सिंह, जो भी नाम बताया उनका, लगभग 4 लाख से ऊपर। हाँ, 4 लाख से ऊपर के वोटों से जीत रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 से 15-17 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जो डिफरेंस आपको 4 लाख का दिख रहा है वो अनसरमाउंटेबल होता है। उसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल होगा, कितना भी आप अलायंस कर लें या कुछ भी कर लें। यहां तो अभी ट्रायंगुलर और 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट दिख रहा है। जी, अब यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Welcome back to Lok Nirnaya 2024, and now we will go across to Chennai, from where our regional correspondent Joy is joining us. Joy, it's a warm welcome to you. Yeah, thank you, Sonu, for inviting me. Yeah, sure. So, Joy, we'd like to know from you, in the first phase on Friday, 19th April, the coming Friday, all 39 constituencies of Tamil Nadu go to the polls. Can you tell us about the excitement around elections? What are the major issues in this election? Yeah, everyone is excited about the election. Mainly the issues which are being talked about, I can just list you out, but I would like to just tell you how the floor is there in the first phase of the election. All the district administrations are ready to just go in for the election mode, and all the preparations like setting up of EVMs and everything has been done, and the security related issues have also been sorted out. Now electioneering is actually in the pitch for the next 2 days. Ministers and VVIPs from all the places are flooding to Tamil Nadu because this is the first phase and the only single phase for all the 39 constituencies. The issues, what I would like to say is, what people are talking about is, Tamil Nadu's coastline is more than 1,076 kilometers, and it is about 15% of the total coastal length of this country. So whenever cyclones or whenever heavy rains come, it is indeed a great problem. The infrastructure is severely damaged during the last cyclone, especially in Chennai and Chennai, Tiruvallur, Kanchipuram and Chengalpattu faced a lot of issues, and particularly the oil spillage at Ennur created a big issue. And after that, there were severe floods in Thoothukudi and Tirunelveli, which was very historical due to unprecedented rains. So that issue is also there.
And after COVID-19, some small industries were also confronting problem, and the same problem is being talked about now. So these are the problems which are being talked about in all the states, especially in the western part of the state. There are a lot of small industries, and they are undergoing issue now. Thank you so much. Thank you so much, Joy, for all this information. And Mukeshji, in the studio, we'd just like to know from you, Tamil Nadu has been a stronghold for regional parties since 1967. Do you think it's time for change? What are the possibilities, briefly? Now, Tamil Nadu is an interesting election. It's going in the first phase. For the first time, I've been witnessing since the campaign started that DMK, particularly the top leadership of DMK, be it Stalin, the chief minister, or his son, or Dayanidhi Maran even recently, so they are all targeting now BJP. Why are they targeting BJP in elections? If BJP is not a force in Tamil Nadu, why will they target BJP pointedly? And particularly the BJP's rise in Tamil Nadu, there are 2-3 factors that can be credited. One is obviously the Annamalai factor is there, Singol factor is there, and the Prime Minister's initiative for that Kasi and Tamil Sangamam. So these are the factors that are playing out, and they are nervous. That's why they are attacking BJP. In fact, now we'll go across to our correspondent Gin Gangte from Mizoram. Warm welcome, and we'd like to know from you, Gin, what are the main issues or agendas of political parties in this Lok Sabha election? Sonu, since Lok Sabha elections are different from assembly elections, so does the change of issues and agendas of political parties. In this Lok Sabha election, most of the political parties are speaking about Jau nationalism, about the free movement regime and border fencing, apart from developmental issues. The ruling Jauram People's Movement, ZPM, is pushing the agenda of cordial relation with the central government for fast-speed development of the state by electing its candidate. The main opposition, Mizo National Front, MNF, is pushing the agenda of safeguarding the tradition, culture, and religious belief of the Mizo people. The Congress, on the other hand, is fighting for protecting the Constitution of India. That includes protecting special provision of the Constitution, which is Article 371C, that relates to Mizoram. The BJP, on the other hand, is promising holistic development of the state. For example, the party promises for upgradation of Jauram Medical College to the level of RIMS. On the other hand, the state party, registered party, the People's Conference Party, is taking up the issue of FMR and border fencing, among others. Sonu. Thank you so much. Thank you so much, Gin. And Mukeshji, we'd like to know quickly from you, there's only one seat from Mizoram, which is reserved for ST category. But you think that's very significant because he or she will be the lone representative of the entire population in the parliament, and therefore the voting percentage is also high in these states? Yes. And one point is should be very clear that Northeast is very important for Prime Minister Narendra Modi and his government. Several initiatives and several things were done and will be done also after the elections. Interestingly, whoever wins in northeastern states, most of them have a tendency of aligning with the central government. Irrespective of political parties, they all align with the center, because without central support, nothing that way kicks in or moves in Northeast. So for Northeast, whoever is elected at the center, they align with that. Mukeshji, you came and you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much. Thank you. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं.
You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com or at WhatsApp on 9289094044. With this, we conclude this program. We will bring you more election-related news and political developments tomorrow at the same time. Namaskar. लोक निर्णय 2024